Welcome to another video. In this video, we are going to discuss the remaining questions from oscillations. We have this very first question. In this question, they are saying if a pendulum has a frequency of 0.5 Hertz, then its time period will be, we already know that time period is the inverse of frequency. So it has to be 1 over f, that is it has to be 1 over 0.5, which is nothing but 2 seconds. So option D has to be the right option. Then if the length of a simple pendulum becomes 4 times, then its time period will become, let's just see, for a simple pendulum time period is 2 pi under root L over G. If we change the length of the pendulum, so it is obvious that the time period will change. Let's just call the new time period to be T dash and the new length to be L dash, right? Let's just rewrite this new length in terms of the original length L. They are saying that this length is now 4 times the initial length, right? So we can replace it with 4L, this G as it is. Let's just take this root 4 outside. It becomes under root 4, 2 pi under root L over G. And we know that 2 pi under root L over G is nothing but the time period, see here. And then this root 4 is nothing but 2. So this makes us conclude that the time period will become 2 times the initial time period, right? Then it says in the given diagram, motion of a simple pendulum is shown. If the time taken by the bob of the pendulum from the position A to B is 0.5 seconds, then the time period will be. Remember, time period is the time to complete one oscillation. और एक oscillation क्या होती थी? हमने पढ़ा था अगर आपका object extreme position से mean पर आए, opposite extreme, वापस mean, and then back to the extreme position, right? This is what we call one oscillation और इसमें जितना time लगेगा वो time period होता है. As per the question, they are saying कि A से B तक आने में 0.5 seconds लग रहे हैं. Another 5 seconds, another 5 seconds back to the mean position, and then another 5 seconds to the extreme position. It makes 4 times the 0.5 seconds. That is the time period of your system is 2 seconds. Option C is the correct option. Then a simple pendulum consists of a point mass, that is this bob, suspended by a weightless and inextensible string from a fixed point of support. Mention two factors on which the time period of a simple pendulum depends. Time period of a simple pendulum is this one, right? It is 2 pi under root L over G. This 2 pi is constant. That means the time period depends on the length of pendulum and then it depends on the acceleration due to gravity, right? Then they are asking you to calculate the frequency of a pendulum if its length is 50 centimeters. Frequency, we know that time period is this one, so frequency should be the inverse of time period, right? So it has to be 1 over 2 pi under root G over L, right? 1 over 2 pi is constant, pi is nothing but 3.142. Then they did not provide the gravity, so it is obvious कि earth की बात हो रही है. Let's just take it to be 9.8 meters per second, right? And then length of the pendulum is given to be 50 centimeters. Do not forget to convert this length into meters because we've already taken gravity to be 9.8 in meters per second square, right? If you are to take this length into 50 centimeters, so you must convert this gravity from 9.8 to 980 centimeters per second square, right? But let's just go with the standard units. Length is 50 centimeters, which is nothing but 0.5 meters. Divide these, take the root and then divide it with 2 pi. You will end up getting 0.704, and because we are dealing with the frequency, so it has to be the standard unit of hertz. Then it says the given diagram represents a simple pendulum that moves from extreme position
to the mean position in 0.4 seconds. यहाँ से यहाँ तक का आने का time is 0.4 seconds, right? So let's just calculate the time period from this information right here. अगर C से B तक आने में 4 seconds, another 4 seconds, another 4 seconds, another 4 seconds to complete the oscillation, right? तो यहाँ से हमें पता चल गया time period is 4 times 0.4, which is nothing but 1.6 seconds, right? Let's just see आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे आपसे कह रहे हैं deduce the numerical values for length and the acceleration of simple pendulum. length क्या होगी and इसका acceleration क्या होगा, ठीक? This is not the gravitational acceleration, right? ये आपसे restoring force की वजह से जो acceleration आपका system experience कर रहा है वो पूछ रहे हैं. क्योंकि time period is 2 pi under root L over G, so we can rearrange this equation. This becomes T square equals 4 pi square L over G, root ले लिया, right? And since we are to calculate the length, let's just make it the subject of our equation. Length is equals to G into T square over 4 pi square, right? Let's put in the values. Gravity, once again, 9.8 meters per second. Time period is 1.6 seconds. Do not forget to place a square over here. And we have 4 pi square, pi 3.142 and uska square. Just put in these values in your calculator and you will end up getting 0.635 meters, right? The length of your pendulum must be 0.635, तभी इसका time period is 1.6 seconds, because हमें पता है time period depends on the length of pendulum. Then the next is to calculate the acceleration. यहाँ पर we are going to use the characteristic equation of simple harmonic motion, right? It says acceleration is equals to omega square into the amplitude, right? जो आपकी oscillation है, जो आप अपना simple pendulum consider कर रहे होते हैं, उसकी length को हम radius के बराबर ले रहे होते हैं, right? तो बस उसी को यहाँ पर place कर देते हैं. All in all, this is the equation we are going to use. क्योंकि वी आर डीलिंग विद दी सिंपल पेंडुलम, तो हमें पता है सिंपल पेंडुलम में ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट जी ओवर एल के, इसीलिए ओमेगा स्क्वायर बराबर होना चाहिए जी ओवर एल के, राइट? रूट कैंसिल हो गया इस स्क्वायर से. And then we have x naught. This x naught is nothing but the maximum displacement of your system from mean position, right? And this maximum displacement is, यहाँ फिगर में इन्होंने बताई है, displacement from mean position is 22 centimeters, and we can also write it to be 0.22 meters, right? So let's just write it 0.22 meters. Gravity we know is 9.8 and length we just calculated 0.635. Divide these values and then multiply it with 0.22. You will end up getting the acceleration that equals 3.395, and then of course it has to be in the units of meters per second square. अगर आपने लेंथ को मीटर्स में रखा, अगर आपने लेंथ सेंटीमीटर्स में रखी और ग्रेविटी 980 रख दी है, तो फिर यही सेम आपके पास लाइक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी एंड यूनिट वुड बी सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. Then they are asking, is there any effect of mass of the time period of the simple pendulum? Do you see mass written here in this expression for the time period? No, you don't, right? So time period of the simple pendulum is independent of mass. It does not makes any difference अगर आपने 0.5 kg का बॉब सस्पेंड किया है उस स्ट्रिंग से या आपने 0.25 kg का बॉब सस्पेंड किया. Time period should remain same. Then time period of a simple pendulum is 4 seconds at a certain length. If its length is increased 4 times, then बताएं उसका time period क्या होना चाहिए. So हम कहेंगे new time period कैसे आएगा? 2 pi under root new length over gravity, right? Length आपसे कह रहे हैं पिछले वाले से 4 times कर दिए, ठीक? तो it has to be 4L. Again इस root 4 को separate कर ले, we get 2 pi under root L over G. This 2 pi under root L over G is nothing but the time period of your system, right? And this under root 4 is nothing but 2. It becomes 2 times T. इस क्वेश्चन में ये बता चुके हैं कि टाइम पीरियड आपका ओरिजिनली 4 सेकेंड्स था जब आपके पेंडुलम की लेंथ L थी. तो let's just place this value and we know that the time period having the length increased to the 4 times of the initial value, it has to be 8 seconds. Then if the acceleration due to gravity is decreased 8 times,
देन न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, अगेन टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। एंड आपसे कह रहे हैं कि ग्रेविटी जब इन्होंने डिक्रीज कर दी है, अब बताएं। ठीक, ग्रेविटी डिक्रीज की है 8 टाइम्स, तो वील राइट g ओवर 8, राइट। एंड देन बेसिक प्रॉपर्टी मैथ में, ये 8 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, इट बिकम्स 8l ओवर g, जस्ट फॉलोइंग द सेम आइडिया दैट a ओवर b ओवर c ओवर d। इसको हम कैसे लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं न्यूमरेटर में, एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, राइट। इसी सेम प्रिंसिपल को फॉलो करते 8 को मैं ऊपर ले गई, देन इस रूट 8 को सेपरेट कर लेते हैं, we are left with 2 pi under root L over G. We know that this 2 pi under root L over G is nothing but the time period and this root 8 as it is. और हमें पता है time period of your system was 4 second. तो root 8 को multiply करते हैं 4 से, you will end up getting the time period which is 11.3 seconds. Then आपसे कह रहे हैं if the phase of vibration is zero at the start of wave cycle, this is the start of wave cycle, right। और आपसे कह रहे हैं इस पॉइंट पर जो फेज है इट इज 0 डिग्री। अब बताएं जब हाफ वेव साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तब फेज क्या होना चाहिए। अगर ये स्टार्ट पे 0 थी, हमें पता है एक कंप्लीट वेव साइकिल 360 डिग्री की होती है, राइट, बिकॉज वी रिलेटेड टू दी सर्कुलर मोशन, और एक सर्कल तो 360 डिग्री का होता है। if it is 0 at the start of the cycle, तो मुझे पता है at the end of the cycle it must be 360, फिर right in between it should be 180 डिग्री, 180 और 80 के दरमियान it should be 90, एंड यहाँ पर होना चाहिए 270। अब वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आपसे कह रहे हैं स्टार्ट में फेज इज 0, बताएं हाफ साइकिल गुजर जाने के बाद, सी हाफ साइकिल गुजर जाने के बाद व्हाट इज द वेव, व्हाट इज द फेज, फेज इज नथिंग बट 180 डिग्री। अगर आपसे कहते हैं क्वार्टर साइकिल गुजर जाने के बाद, आप कहते हैं 90, या आपसे कहते हैं कंप्लीट साइकिल गुजर जाने के बाद, आप कहते हैं 360 या 0 फॉर द नेक्स्ट साइकिल, राइट। देन आपसे कह रहे हैं if oscillation of a system is given by this, then the displacement of the system at 9 seconds, see they are asking you to calculate the displacement at a particular instant of time, that is they are asking you to calculate the इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ओमेगा टी। ठीक, अब इन दो इक्वेशंस को कैलकुलेट करें। मुझे पता है मेरे सिस्टम का यकीनन फिर एम्पलीट्यूड 0.88 मीटर्स है, एंड दिस हैज टू बी दी ओमेगा कॉस ओमेगा इज पाई बाय 5, एंड देन टाइम कितना गिवन है 9 सेकेंड्स पे चाहिए, जस्ट पुट इन 9 टाइम की जगह एंड यू विल जस्ट place these values in calculator and you'll get to the final answer. यूजुअली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर ये करते हैं, हमें पता है दिस इज ओमेगा, राइट, और ओमेगा का यूनिट क्या होता था, रेडियंस पर सेकेंड, इन साथ में वी हैव टाइम जिसका यूनिट होता है सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो मुझे पता चला कॉस के आगे मैं जो भी एंगल रखूंगी इट हैज टू बी इन द यूनिट्स ऑफ रेडियंस। तो आप पहले अपने कैलकुलेटर की सेटिंग्स चेंज करेंगे, अगर यूनिट डिग्री में लिखा हुआ है तो आप एंगल्स की सेटिंग में जाकर पहले उसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन यू विल एंटर दिस पाई ओवर 5 एंड देन ये 9, इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद कॉज ऑफ दिस वैल्यू लें एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 0.88। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप कन्वर्ट ना करें इसको रेडियंस में, आप डिग्री में ही रहते हैं अपने कैलकुलेटर की सेटिंग को, बट स्टिल आपका करेक्ट आंसर आए, तो आपने क्या करना है, हमें पता है पाई रेडियंस हम कहते हैं 180 डिग्री को, तो फिर आप अपने कैलकुलेटर में पाई के बजाय प्लेस करें 180 एंड दिस 5 एंड दिस 9 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है उसको डिग्रीज में रहते हुए कॉज ऑफ दिस आंसर लें एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 0.88। Either way, you will end up getting the instantaneous displacement at 9 seconds to be 0.711, and क्योंकि it is displacement तो it has to be in the units of meters, right। अगर ये जो maximum displacement है इन्होंने meters में दी है तो, right। Then आपसे कह रहे हैं given figure shows a simple pendulum executing simple harmonic motion, restoring force in the given sample is, हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका सिस्टम किसी रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर देता है, राइट, कोई रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करती है, बिकॉज इक्विलिब्रियम है ऑब्जेक्ट का यहाँ पर, ठीक, तो जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में पुश कर रही होगी हम कहेंगे वो रीस्टोरिंग फोर्स है। लेट्स जस्ट सी इस केस में कौन सी फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम करती है।
मुझे पता है इस बॉब का अपना कुछ मास है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट, राइट, मैं इसको mg भी लिख सकती हूँ। फिर मुझे पता है इस वेट को मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ इसके कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट आ जाएगा ये, एंड दूसरा जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ जाएगा वो ये होगा। Since this is the angle theta, following मैच के बेसिक रूल्स, this should be the angle theta, ठीक, बिकॉज हम कहते हैं कि आपके पास एक लाइन जा रही है, अगर दो पैरेलल लाइंस उसको कट कर रही हैं तो जो ये एंगल है वही ये एंगल भी होना चाहिए, जस्ट फॉलोइंग दिस इज थीटा। फिर मुझे पता है दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस मस्ट बी द बेस, बिकॉज हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान होता है आपका एंगल थीटा, एंड देन दिस हैज टू बी द परपेंडिकुलर, ठीक। मुझे पता है हाइपोटेन्यूज और बेस कैसे रिलेटेड होते हैं, कॉस थीटा से। इसका मतलब है अगर मैं ये कंपोनेंट निकालना चाहूँ तो दिस शुड बी mg टाइम्स कॉस थीटा, राइट। एंड इसी सेम रूल को फॉलो करते हुए अगर मैं ये कंपोनेंट निकालना चाहूँ वेट का, तो इट शुड बी वेट टाइम्स साइन थीटा, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ mg साइन थीटा, ठीक। एंड अ नेगेटिव साइन टू शो कि ये ओपोज कर रहा है ऑब्जेक्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, राइट। नाउ हम सिंपल पेंडुलम की जब डेरिवेशन करते हैं तो हम स्मॉल एंगुलर अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, हम कहते हैं आपने इस पेंडुलम को बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं किया, आपने इसको बहुत स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी है। फिर मैथ्स में हमारे पास एक स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन है जिसमें हम कहते हैं जब भी थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन ऑफ थीटा या टेन ऑफ थीटा हमारे पास थीटा इटसेल्फ आ जाता है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपका थीटा है 0.1, पुट इन साइन ऑफ 0.1 in your calculator and you'll get 0.1 के करीब कोई वैल्यू, राइट। तो जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इटसेल्फ थीटा के बराबर आता है। इसी स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन को लगाते हुए हम कह सकते हैं दिस नेगेटिव mg sin theta could be rewritten as negative mg theta, see, so this is the correct option, क्यों, because this is the component of weight which is trying to push the object towards the main position, right. So weight itself is not acting as the restoring force. Component of weight, which is minus mg theta, it is acting to restore the equilibrium position of body. फिर इफ यू आर आस्क्ड कि फिर बताएंगे ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है वेट का, तो आप कहेंगे ये सिंपली टेंशन इन स्ट्रिंग को बैलेंस कर रहा है, राइट। देन दे आर आस्किंग यू कि बताएं जो आपके पास सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड किससे इंडिपेंडेंट होता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, क्या वो मास पर डिपेंड करता है, नहीं वो मास पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये एक करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्या वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, क्या वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है, नो, वो तो लेंथ पर डिपेंड करता है, वी हैव अंडर रूट एल ओवर जी इन दी फार्मूला, राइट। एंड वो एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है, हमसे तो पूछा है किस पर इंडिपेंडेंट है, राइट। सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ओनली, बाकी लेंथ और ग्रेविटी दोनों पर डिपेंड करता है। फिर आपसे कह रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम इज शोन इन द गिवन डायग्राम when the mass m is pulled slowly, spring having a spring constant k is stretched by an amount x naught against the elastic restoring force f. At any instant t, displacement is x and the angular frequency is omega. Show that omega for this system is under root k over m. इस derivation के लिए all we need are two equations. We know that restoring force is equals to negative kx, and then as per Newton's law we know that force is the product of mass and acceleration, right. Let's just equate these two equations and we know that then this ma is equals to kx, just dropping this negative sign because we are interested in calculating the magnitude, right. And this negative here just shows that displacement and restoring force are opposite, right. So let's just rearrange this equation. We can write k over m times x and now relate it to the characteristic equation of simple harmonic motion. अभी हमने पीछे पढ़ा था ना simple harmonic motion की characteristic equation क्या होती है, it is a equals omega square into x. Now relate a x, इसका मतलब है omega square must be equals to k by m, फिर मैं लिख सकती हूँ omega is under root k by m, right. This is what we were asked to derive. Then they are saying that there is a horizontal mass spring system that is performing simple harmonic motion.
with an amplitude of 0.08 meters. Amplitude is 0.06, right? 0.06 meters. And the angular frequency, that is omega, 14 radians per second. Its instantaneous velocity at a point 0.02 meters from its main position will be, यानी velocity calculate करें जब instantaneous displacement is 0.02 meters, right? We have a predefined formula to calculate the velocity, that is velocity is equals to omega under root x naught square minus x square, right? And do not get confused if you see कहीं पर ये वाली equation लिखी हुई, it is the same thing because हमें पता है कि under root k by m is nothing but omega, तो हमने उसको omega की form में बाहर लिख लिया. That's up to you. Omega directly given है, use this equation. Velocity is 14 under the root 0.06 का square being the amplitude and then 0.02 meters from the main position. Just put in these values and calculate the velocity of your system. Velocity turns out to be 0.791 meters per second, right? So the correct option is option A, 0.79 meters per second. Then, if the maximum potential energy of a 3 kg block and 100 Newton per meter spring constant is 100 joules. अगर आप wording में confuse हो तो just pay attention to the units. Maximum potential energy is 100 joules because joules is the unit of energy, right? Then kg is the unit of mass. Mass is given to be 3 kg and the spring constant is 100 newtons per meter because newtons per meter is the unit of spring constant. K is 100 newtons per meter. Then आपसे पूछने बताएं maximum amplitude क्या है? Do we know the formula for maximum potential energy? Yes, we do. Maximum potential energy is half, this is max, right? K x naught square. This x naught is the amplitude you are required to calculate. Let's just rearrange this equation so that the amplitude becomes the subject of your equation. X naught equals to maximum potential energy over K, but this equals x naught ka square, right? We are to calculate x naught. Take the root of this equation. Now just put in these values. 2 maximum potential energy is 100 joules over spring constant is 100 under the root 100 cancel, amplitude is under root 2, right? Meters, you can always write it to be 1.14 meters, 1.414 meters as well because इन्होंने जो हमें spring constant दिया था it was in the standard units of newtons per meter. Then a 1.2 kg mass is hung from a spring having constant this. Again हमें mass given है which is 1.2 kg and spring constant k is given which is 100 newtons per meter. आपसे कहते हैं टाइम पीरियड निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें. आई सजेस्ट कि पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लें फिर उसको यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकाल लें. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अंडर रूट k over m, right? K is 100 and then mass is 1.2. Put in these values in your calculator and the angular frequency comes out to be 9.128 radians per second. ठीक. Then how do we calculate frequency? हमें पता है frequency is omega over 2 pi. So let's just write this omega over 2 pi which is 2 into 3.142, right? You'll get 1.45 hertz because हम frequency की बात करें. And once we know the frequency, just reciprocate this frequency to get to the time period. Time period turns out to be 0.688 seconds. Then given below graph shows the relation between amplitude and time. This is time on x-axis and we have amplitude on y-axis. आपसे कह रहे हैं name and define the type of amplitude, type of oscillation shown above. See, this is periodic oscillation. Yes, it is. It is repeating itself after an equal interval of time. But do you see the constant amplitude? No, you don't, right? Amplitude of the oscillation keeps on decreasing with the passage of time. This type of oscillation is called damped oscillation. Damping
रिमेंबर इज द प्रोसेस जिसमें आपका सिस्टम अपनी एनर्जी को डिसिपेट करता है इन दी सराउंडिंग, और क्योंकि आपके सिस्टम की जो एनर्जी है वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, राइट। तो जब मैं कहती हूँ मेरे सिस्टम की एनर्जी जो टोटल है वो कम हो रही है, तो यकीनन फिर उसका एम्पलीट्यूड भी कम होना चाहिए, राइट, जो इस ग्राफ में विजिबल है। फिर आपसे कह रहे हैं अगर आप इसको डिफाइन करें तो बता दें, इट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच सिस्टम continuously dissipates its energy to the surrounding and then finally comes to rest with the decrease in amplitude. Which of the following options represents heavy damping? हमने कहा डैम्पिंग वो प्रोसेस है जिसमें आपका सिस्टम एनर्जी डिसिपेट करता है, राइट, एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में। जब मैं कहती हूँ हैवी डैम्पिंग, इसका मतलब है मेरा सिस्टम ज़्यादा जल्दी एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, और जितनी जल्दी वो अपनी एनर्जी डिसिपेट करेगा उतनी जल्दी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो फॉल करेगा और वो रेस्ट पर आ जाएगा, राइट। तो हैवी डैम्पिंग इस केस में किसकी होनी चाहिए? ऑप्शन सी इज द वन जिसमें आपका सिस्टम एनर्जी लूज करते करते रेस्ट पर आ गया। Which of the following phenomena is represented by the given graph? ग्राफ बता क्या रहा है? आपसे बता रहे हैं कि आपका कोई सिस्टम है जिसको आप मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मिल रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जिसपे आपके सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो शूट कर जाता है, और हमें पता है दिस फिनोमेना इज नथिंग बट रेजोनेंस, राइट। शार्प इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, और रेजोनेंस कब होता है? जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपके सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, right? And this frequency is what we call resonant frequency, represented with F naught. Then, what effect occurs on amplitude and resonance of oscillations if damping is small? अगर आपके सिस्टम में damping small है तो अभी हमने क्या पढ़ा था? डैम्पिंग एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करवाती है, राइट। अगर आपके सिस्टम में डैम्पिंग स्मॉल है तो एम्पलीट्यूड में कम रिडक्शन आनी चाहिए, इन अदर वर्ड्स एम्पलीट्यूड कंपेरेटिवली ग्रेटर ही होना चाहिए, राइट। हैवी डैम्पिंग ज्यादा डिक्रीज आया एम्पलीट्यूड में, मीडियम डैम्पिंग मीडियम एम्पलीट्यूड है, स्मॉल डैम्पिंग में सी आपके सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड होता है वो ग्रेटर होता है, सी। सो एम्पलीट्यूड शुड बी ग्रेटर, बट ऑप्शन ए और सी दोनों में एम्पलीट्यूड ग्रेटर है। टू आंसर दिस क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए रेजोनेंस से पीक पर क्या फर्क पड़ता है, राइट। आपके सिस्टम की डैम्पिंग जितनी कम होती है उतनी शार्प पीक आती है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ की। जैसे जैसे एक्सटेंट ऑफ डैम्पिंग इंक्रीज होता जाता है जो ग्राफ है वो ब्रॉड होता जाता है, राइट। So for the case of small damping, amplitude should be greater and the resonance peak should be sharp. This graph right here is enough to write, make it evident कि ऐसा ही होना चाहिए। Graph shows the response of forced oscillation of a pendulum in air. आपका पेंडुलम एयर में ऑसिलेट कर रहा है, राइट, और आप उसको कंटिन्यूस कोई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करें एंड देन फोर्स उसकी वजह से कुछ रेजोनेंस हो रही, ये आपके पास उसका जनरल ग्राफ आ गया। आपसे कह रहे हैं अगर यही सेम फिनोमेना हम परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन सराउंडिंग में एयर मौजूद नहीं है तो बताएं क्या फर्क पड़ना चाहिए इस रेजोनेंस के ग्राफ पर। सी हमें पता है एयर सर्व्स एज अ डिसिपेटिंग मीडियम, राइट, ये एक ऐसे मीडियम के तौर पे काम करती है जिसमें योर सिस्टम कंटिन्यूसली लूजेस इट्स एनर्जी टू, राइट। तो अब अगर मैं कहती हूँ एयर मौजूद नहीं है इसका मतलब है देयर इज नो मीडियम जिसमें आपका सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है, इसका मतलब है आपका सिस्टम एनर्जी ज्यादा लूज नहीं करेगा, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पे विल बी दी मैक्सिमम, शार्प पीक आएगी आपके पास। दिस शुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। अगर ये हमें कहते हैं एयर से हैवी कोई मीडियम है तो बताएं तो हम यकीनन इस पीक को थोड़ा ब्रॉड करवा देते और एम्पलीट्यूड को थोड़ा रिड्यूस करवा देते। Then let's just see one last question from this topic. It says interpret the graph for, ग्राफ को देखें और बताएं x एक्सिस पे क्या आना चाहिए, y एक्सिस पे क्या आना चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरे सिस्टम की जिसका ये ग्राफ है, एंड मेरे उस सिस्टम की कोई एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। लेट्स जस्ट सी। देखकर तो हमें समझ में आ गया ये वैसा ही ग्राफ है जो भी हम पीछे पढ़ कर आए, राइट, रेजोनेंस का ग्राफ है। x एक्सिस पे वी हैव फ्रीक्वेंसीज, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसीज, x एक्सिस पे वी हैव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फिर हमें पता है किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे आपके सिस्टम का क्या शूट करता है, इट्स द एम्पलीट्यूड दैट शूट्स, राइट। तो y एक्सिस पे वी शुड बी राइटिंग एम्पलीट्यूड। फिर आपसे कह रहे हैं बताएं इस फिगर को देखते हुए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एट विच
the amplitude of your system increases, right? This is the frequency जिस पे आपके system का amplitude increase कर रहा है. Depending on damping कितनी है उसके हिसाब से sharpness of the peak and the maximum amplitude differ कर रहा है. But one thing for sure, बाकी frequencies के मुकाबले में इस frequency पर इन तीनों plots में जो हमारे पास amplitude है वो maximum है, right? So this means this 1011 hertz must be the resonant frequency of your system, right? And one of the natural frequencies, see, resonance का phenomena तब होता है जब driving frequency आपके system की natural frequency से match हो जाती है, right? अगर मैं कह रही हूँ कि 1011 is the resonant frequency, इस पर resonance का phenomena हो रहा है, तो यकीनन this would be one of the natural frequencies of your system, right? Your system might have multiple natural frequencies, जिसमें से this 1011 is one. I hope this makes sense.